Hello students, welcome to Vidya Mandir IIT NEET Cell and I am Sandeep Patil. Now here the redox reactions part and the last step of this lesson वो क्या है? Balancing the redox reaction. One example we had finished. The yet another example I am going to discuss. Here it is balance the redox reaction by oxidation number concept or oxidation state concept. What is that reaction given here? Chromate, dichromate Cr2O72 minus has reacted with I minus. This reaction is in ionic form. Ions दिए गए twice I minus Cr plus 3 IO3 minus. So all these are in water, aqueous, 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 aqueous. Now we want to balance the reaction by which concept? Oxidation number concept. Now you know that the first step is to find the oxidation state or oxidation number of all the elements in this reaction. So the step 1 is assign oxidation state or find the oxidation state of all the elements, isn't it? तो इधर Cr2O7 फिर से ये रिएक्शन लिखने का लिखो साहब, इसका रिएक्शन लिखो अभी Cr2O7 2 minus plus I minus aqueous gives you Cr plus 3 plus IO3 minus. Either when you find the oxidation state of chromium, you know how to find the oxidation state, isn't it? So chromium is plus 6 here, plus 6. Find it out. Or if you don't know to find, please see the previous lectures, finding the oxidation state. So plus 6, oxygen always minus 2. So here I minus is there. Monoatomic ion, single atom is monoatom. Monoatomic ion का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? चार्ज इतना, चार्ज इतना, चार्ज इतना, चार्ज कितना? -1. So this is -1. So what is the oxidation state of chromium? It is +3. Charge of this +3. Now whether this will be -1? No, because it is not a monoatomic. It is polyatomic. Polyatomic. Then we will calculate it. Calculate it. Oxygen, एक ऑक्सीजन का -2. कितने ऑक्सीजन? 3 to the 6. -6 is equal to -1. -6 उधर गया तो क्या होता है? +5. +5 will be the oxidation state of iodine. +5 will be the oxidation state of iodine. समझ में? ठीक है. तो अभी स्टेप 2. व्हाट इज द स्टेप 2? स्टेप 2 आइडेंटिफाई, शोधून काढा. व्हाट? आइडेंटिफाई, ढूंढो. किसे ढूंढो? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है. ऑलराइट, तो चलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. Identify the species undergoing change in oxidation number. Identify the species undergoing change in oxidation number. Change in oxidation number. So what are the species that undergo, what are the atoms that undergo change in oxidation number? So here chromium, let us write Cr2O7 -2 plus I minus gives you me and everyone. That is Cr plus 3 plus IO3 minus. So इसका है साहब +6, इसका है +3. तो यहां +6 का +3 बन गया, तो इधर चेंज हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो इसका इंक्रीज हुआ है. चलो लिख लेते हैं यहां पर, ये वाला सब ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर.
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज? देखो +6 का +3 हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी गुड, डिक्रीज। एंड हियर -1 हैज बिकम +5, increase in oxidation number. This is decrease, this is increase. Now after doing step 2, step 3, step 3 is total increase और total decrease कितना हो वो देखने का है। total increase, total decrease. Let us see step 3, identifying. Step 3 is what? Identifying total increase or decrease. Identifying total increase or decrease. देखो अभी ये क्या हुआ था, +6 था, गेटिंग, +6 का साथ +3 हुआ है। लेकिन देखो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, +6 का अगर +3 हुआ है then the problem here it is between what you can say between +6 का +3, so you will understand कि there is decrease by 3, there is decrease by 3, you will understand, ठीक है। Now if I say that I माइनस का, इधर देखो, -1 का +5, टोटल इंक्रीज इज बाय 6, तो इधर देखा आपको क्या लगेगा, काय वाटतं तुम्हाला की +6चा +3 झाला म्हणजे डिक्रीज बाय 3 वाटतं, पण नाही, पर ॲटम डिक्रीज बघायचं, पर ॲटम डिक्रीज, कारण इकडे Cr2 आहे ना, तर इथं ट्वाइस Cr जर बघितला आपण, ट्वाइस Cr जर घेतला, बॅलन्स इट, सो 2 3 is 6, it is 6, it is also 6, so net is 6, same है, no changes there, so total increase and decrease are one and the same, total increase and decrease are one and the same. Are you following what I am saying? So therefore there is no need to balance increase by decrease, there is no need to balance increase by decrease here by oxidation number. But whether oxygen are balanced, मग ऑक्सिजन कसं बॅलन्स करायचं, जिथे ऑक्सिजन कमी पडतायत, wherever oxygens are less, you add water there. Let us see what we can do. Now step 1 is finding oxidation state, step 2 is identifying the species undergoing change in oxidation number, and step 3 is total increase, total decrease, same is there. इथं हे सेम टॅली झाल्यामुळं आपल्याला इन्क्रीज डिक्रीज बॅलन्स करायची गरज नाही आहे, समजलं? आता बघा, now here see step 4 I will take. What is the step 4 I have to take? Balancing of oxygen. What it is? Step 4 is balancing of oxygen. So let us see LHS और RHS में ऑक्सीजन कितने बन रहे हैं. Okay? Let us see LHS and RHS में ऑक्सीजन कितने बन रहे हैं. LHS this side, LHS oxygen, 7 oxygen atoms, 7 are. Here oxygen are how many? Only, I think only 1 oxygen is there. No, 3 oxygen atoms are. So RHS में 3 oxygen atoms are there. So RHS side is deprived. Deprived means कमतरता से, कम रहने का. कितने कम है? 4 ऑक्सीजन कम है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो ना साहब उधर. हाँ ठीक है, Cr2O7 -2 plus I minus aqueous gives you twice लिखो, twice Cr plus 3 plus IO3 minus, और इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम है तो ये H2O लगा लो. कितने? 4. इधर 7 थे, ये 4 इधर ऐड किया तो टोटल 7 ऑक्सीजन हो गए. Now as this reaction balance the redox reaction by oxidation number, ये तो कहा गया है, लेकिन it is in the acidic medium. वो भी एग्जाम्पल में देते, it is in acidic medium.
तो एसिडिक मीडियम में अगर एसिडिक मीडियम में है तो क्या करने का, हाइड्रोजन ऐड करने के, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर हाइड्रोजन ऐड करने के। बेसिक मीडियम में है तो OH माइनस, राइट, ठीक है। तो नाउ यू हैव बैलेंस्ड फॉर ऑक्सीजन, नाउ बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन यू हैव टू डू, बैलेंसिंग हाइड्रोजन, सो बैलेंसिंग हाइड्रोजन H2। सो LHS में साहब हाइड्रोजन नहीं है, RHS में कितने हैं, 4 2 8 हाइड्रोजन आर देयर, 8 hydrogen are in RHS, but in LHS side, this side, no hydrogen atoms are there. So 4 2 8 hydrogen atoms पाहिजेत कोणत्या साइडला, इकडं LHS left hand side. So Cr2O7 minus 2 plus I minus 4 times 8 times H plus, 8 times H plus gives you me and everyone IO3 minus plus 4 times H2O. देखो, are you getting? Now here, now let us check whether all the atoms LHS, RHS are balanced or not. Let us see. 2 Cr, 2 Cr, 2 Cr. Okay. ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, तो इधर 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अभी तो बैलेंस किया था आपने, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यू हैव गॉट 8, देयर आल्सो यू हैव गॉट 8, isn't it? Now atoms have been balanced. Now tell me whether it is balanced by ions. Let us see ions are balanced or not. 2 माइनस है सर, और एक माइनस है, और 8 प्लस है, तो 8 प्लस माइनस 3 कितने, +5, सो इट इज +5। हियर यू हैव गॉट टोटल चार्ज इज +5, इधर भी चार्ज +5 आते क्या देखेंगे, 2 3 6 +6 -1 +6 -1 +5। So this redox reaction is balanced by atoms and it is also balanced by charges, hence the net balanced reaction. This is a net balanced reaction. Are you getting what I am saying? Yes. Now next example I will be giving you, that is a homework you have to do and send it. Okay, let us see. Balance, same question I will ask, but balance the redox reaction in the basic medium. I am going to ask you, in the basic medium you will balance the redox reaction in the basic medium. What is that? MnO4 minus plus magnet per magnet ion, so plus Br minus gives you MnO2 प्लस, और क्या आएगा इधर, BrO3 माइनस, राइट। सो यू हैव टू बैलेंस दिस redox reaction in the basic medium. So this is the homework for you. Keep watching, keep enjoying chemistry.